Namaskar. Good evening, ladies and gentlemen. Myself, Rishit Kotecha, Managing Director at Madhusudan Masala Limited. Wish you all happy Diwali and a happy New Year. I welcome all of you to the H1 FY24 earnings call. Since it is our first earning call, I would like to brief about our company and our product range. I believe you have had an opportunity to review the earning presentation and the financial results that were uploaded on the exchange. We are Madhusudan Masala Limited, engaged in the business of manufacturing and processing of more than 32 types of spices under the brand name of Dabalati and Maharaja. We also sell some other products other than spices like tea, Rajgira flour, papad, soya products, asafoetida, ready-to-mix pickle powder, black salt powder, rock salt powder, katlu powder, kasuri methi, etc. under the brand name of Dabalati. Operating in the industry since last 4 decades, our promoters Mr. Dayalji Bhai Kotecha and Vijay Kumar Kotecha laid the foundation of our business in the year of 1982 through a partnership firm. Later it has been converted into a limited company. Our next generation, myself, Rishit Kotecha and Hiren Kotecha, continue the legacy and develop the extensive experience in the industry. We believe that we have established our brand as the preferred home consumption brand for the Indian families. We operate from our manufacturing facility located at the Jamnagar, Gujarat. Our manufacturing unit is situated in industrial area at Hapa near Jamnagar and is strategically located near the local APMC market, as we are procuring our raw materials very easily and reduce our transportation cost as well. Our manufacturing facility is equipped with the plant and machinery to facilitate the efficient production process like cleaning, drying, grading, sorting, grinding, packaging. All process are in-house. All the spices and other products are manufactured at our unit with atmosphere and by way of natural process with scientific methods. Some other products like asafoetida, papad and soya chunks are procured through the third-party manufacturers with our specific standards and under our own brand name Dabalati. Our spices are available in retail and wholesale packs for consumers as well as Horeca business. Ground spices are sold in packs of 10 grams to 20 kgs, while blended spices are available in 10 grams to 100 grams. Our business is majorly spread in this region of Saurashtra and southern part of the Gujarat and some parts of Maharashtra also. It has been a pride moment for Madhusudan Masala that we are delivered a solid performance on the both financial and operational front for the Q2 and the first half of the financial year 24. Consolidated the revenue for the financial year 24 of the first half is increased by the 32.5%, considering INR of 54.28 CR, while EBITDA for the first half year is increased by 70%, INR 5.82 crore, while our PAT has been increased by 84% to the INR 3.31 CR in the first half of 24. So, our first half is a very good sign. Although our main period of the season is coming to second half, लेकिन फिर भी हमारा फर्स्ट हाफ काफी अच्छा रहा. Coming to the project update and the product highlight, I am pleased to say that our cold storage facility is fully operational from this month. After started of own cold storage, our rental cost will be saved. Also, our new manufacturing plants started delivering. Out of 6 new manufacturing plants, 2 were supplied and the rest will be supplied within this December. After installation of new plants, we will be able to process with less manpower and more linear quality spices to our consumers. Considering the overall growth in the spices market and our future plans, we are giving it guidance of approx 30% increase in our revenue this year with improved margins. That is all from my end. Thank you for your time. I would now request you to open the floor for question and answers. Thank you. Thank you very much, sir. We will now begin the question and answer session. The first question is from the line of Rahil Shah from Crown Capital. Please go ahead. Hello, sir. Am I audible? Yes. Hello.
Anji, good afternoon, sir. Good afternoon. First question, you said main period of season is now H2, barabar? Yeah. So is it fair to assume that like majority of the revenue comes from this? So has it historically been the same, the split of revenue, that H1 is lesser and H2 is more? Yeah, H2 is more. As per our historical data, our H1 is 30 to 35% of our total revenue, while H2 is 60 to 65%. So our H2 is season period, and it will be double the H1. Double the H1. Okay. And what is the outlook for your, other sales, which is lower, in terms of split of revenue between own brand and other sales? So उसमें क्या लग रहा है आपको कि वो कितने से बढ़ेगा, और उसमें key products क्या होते हैं? Yes, that's our key products are ground spices like CTC, chili, turmeric, coriander, and this half year we already achieved good sign of own brand, like in total sale of 54 CR of this half year, we achieved 35 CR in own brand, and CTC is stood at 15 CR, 13.40 CR. Yeah, so that's what I'm asking. So what's the outlook for that? Is it going to be like this proportion will stay the same, or you expect more from, currently this year this could be stood at this level only, because our tried our best, but all the efforts are doing to sell the own brand material only. और अभी हम आगे आने वाले दिनों में महाराष्ट्र ओपन कर रहे हैं. अभी हमने महाराष्ट्र में हमारा सेल्स स्टाफ एक्वायर किया हुआ है, जो 1 दिसंबर से ज्वाइनिंग करेंगे. तो होप है कि वहां से भी हमें काफी अच्छी सेल मिलेगी. और अभी जो जितना भी नया मार्केट कवर कर रहे हैं वो पूरा ब्रांड ओन ब्रांड का ही कर रहे हैं हम लोग मार्केट. Mr. Shah, does that answer your question? Hi, sorry, am I audible? Yeah, I just Yes. have a last question. You've guided for 30% this year. Now, Yes. I would like to know your thoughts on margins as well. What will be steady state margins? And if you can also, give a certain idea of what kind of growth are you expecting next year, well, FY25. And that's my last question. I'll get back to you. We are expecting 30 to 32% revenue growth, while our PAT margin would be increased accordingly, because we are growing in own brand sales, so our margin should be increased. Tentatively, tentatively this 30% growth will be continuing in FY25 also. So is it fair to say you will touch double-digit margins? EBITDA? EBITDA will be double-digit surely. PAT will be in 24. It is in single-digit only. Okay. Thank you for answering. I'll get back to you. Thank you and all the best. Thank you. We'll take the next question from the line of Akshat Vijay, who is an individual investor. Please go ahead. Hello, am I audible? Yes. Yes, sir. Yeah, hello, sir. Can you please bifurcate the H1 revenue growth in terms of price increases and volume growth? I did not get your question properly. Your voice is cracking. Hello? Sir, Mr. Vijay, I would request you to kindly use your handset, please. Yes, sir. One second. Hello? Yes, sir. Please proceed. Yes. Yeah. So my question is that can you please bifurcate the H1 revenue growth in terms of volume growth and price increases? Sure. I mean, you want to know the quantity and amount? Yes, I want to know the volume growth in H1.
And what is the contribution of price increase in the overall growth? Yeah, just give me 1 minute. Yes, the volume is almost stable, considering the last half 22 H1. So the volume is increase as per the... Yeah. Yeah, just 1 minute. Yes, our rate of the raw material and selling product are almost same, considering the last year. So the volume of the product is same as increase as amount. Yeah. Actually, there is an increase in quantity compared to the previous semi-half. So almost the prices remain stable in both the if you compare this half-yearly result with the immediately preceding one. So rate is almost the same. So actually there is an increase in volume in terms of quantity. You can say like this. Okay, got it. So like the overall revenue growth is coming from the volume growth only. There is no price rise, right? Okay. Yes. Almost stable. There is no. Almost stable. Minor change is there, but this is not considerable. Yeah. Okay, got it. And my next question is that, can you provide the current capacity utilizations for the various segments? And like, do you have any plans to increase the current capacity in near future? Our production capacity is more than our requirements, because our chili capacity is 24 lakhs kg per hour, while turmeric, coriander is also 12 million. So the capacity utilized in the last 22-23 is 33%, and this half yearly we utilize more than 40%. So we do not need to expand our manufacturing plant. But yes, we are changing our all manufacturing plants, because our plants are semi-automatic. So we are going to fully automation process, and which will less our manpower, and also contactless, atmospheric contactless manufacturing process. So the quality will be linear quality spices will be given to the consumers. So we will be top 3 players, manufacturer in spices industry after installing the new machineries. Okay, so like you're currently operating at 40% capacity utilization side. So like, Yes. do you have any plans to increase this in going ahead? This 40% utilization rate? Yeah, because our business is seasonal business. So in first H1 we utilize 40%. After February and March, it will be up to 70 to 75%, because the season period is more consumed. Okay, sir, got it. So that's it from my side. All the best. Yeah, thank you. Thank you. Participants who wishes to ask questions may please press star followed by 1. The next question is from the line of Tanvi Jain, an individual investor. Please go ahead. Hello, sir. Congratulations on your listing on this NSE MOS platform. I just have a couple of questions, starting with, first, if I see the sales pattern, the sales have doubled from 65 crores in FY22 to 127 crores in FY23. Along with your fixed assets have also doubled. So what is the main reason behind this revenue being doubled over the year? In 22-23, we achieved at 127 CR, and 22 it has been at 65 CR. So almost it is doubled. But
our actual turnover was 10 CR. Turnover was in another firm due to conversion of our partnership firm into private limited company. We got misguided by some our other auditor that we have to stop the production selling in existing firm, and so our 10 CR revenue was booked in another firm. So actual turnover was 75 CR in 22, and in 23 it was 127 CR. All this revenue grown because of our marketing strategy and a new area discovered. Earlier we were present in only Saurashtra region, and last year we appointed distributors and wholesalers in some southern part of Gujarat, like Surat, Valsad, Baroda, and Maharashtra also. So this presence in new area has increased our sales. Okay. So just one thing, just appointing more distributors within Gujarat only got you sales of 70% upside sales. Yeah. Then this year you plans to step into Maharashtra region, then why only a guidance of near 30% as compared to 70% while moving within the state, and now when you're increasing your market area, you've given a guidance of only 30% increase. So what is the main reason? Yeah. Sure. I will explain this, because our product, we are selling a majority CTC products, I mean chili, turmeric, coriander. These basic ground spices are very region-wise sales product. I mean, in Saurashtra, the taste of chili and coriander are different than the southern part of Gujarat. And same like in Maharashtra, the chili is consumed in another quality. So we have to discover the all type of quality and survey the market, taste of the consumer, and other parts like distributor channels margin, retailer margin. So all this takes big time to cater the new market. So we considering 30% is will be 30% is enough for us, because 70% is not 1 year. Our 70% is only not help of 1 year. We are planning. We were planned for before 2 or 3 years. Then after we got 70% increase in sales. But so in FY21 to FY22, the numbers were just flat. This marginal increase in revenue was over FY22 to FY23. So my question is, if Gujarat seems a better market, why don't we plan for a deeper penetration in Gujarat only? Or if you think that these marketing strategies give result after a period or two, then FY22 was flat as compared to 21. We saw this increase in FY23 only. So I'm just wondering about the revenue pattern. No, your question is right. That's why I told you that we were planned before 2 or 3 years. Then after we got result in 23, so our sales had increased. Because we मतलब रातों रात हमें सेल्स इतना नहीं बढ़ा है. हमने कहीं जाकर 19-20 में मार्केट को समझा था, सौराष्ट्र के अलावा बाहर के मार्केट को, जैसे साउदर्न गुजरात और महाराष्ट्र में. तब जाके हमें 22-23 में उसका फायदा मिला. तो आज वो 22-23 के साल में हमें उसका रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला. सेम अगर अभी हम 23 में हम महाराष्ट्र में और राजस्थान के कुछ इलाकों में जाएंगे, तो उसका अभी हम सर्वे करेंगे. उसमें वहां पर हम हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे, सेल्स टीम बनाएंगे. तो उसका फायदा कहीं ना कहीं जाके 24 या तो 25 के फर्स्ट हाफ में दिखेगा. तो अभी हम 30% का
मान के चल रहे हैं कि भाई पूरे का पूरा हमें मार्केट कवर ना कर पाए, लेकिन 5-10% का भी हम मार्केट शेयर एक्वायर कर पाए तो हमारा जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 32% तक रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। तो सर आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि अगले 2 साल बाद हमें यहाँ से वापस 50-60% की रेवेन्यू ग्रोथ वापस मिल सकती है। आपने हमें बोला कि 25 तक 30% का रेवेन्यू ग्रोथ रहेगा, बट उसके बियॉन्ड क्योंकि आपका पेनिट्रेशन बढ़ जाएगा, हमें वापस एक और हायर डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ मिल सकती है 50-60%। यस यस। ओके सर, एक दूसरी चीज आपने लिखा था, थैंक यू फॉर दिस आंसर। सर आपने लिखा था कि ओन ब्रांड्स की सेल आपकी कम हो गई 70% से 47% पे 21 से 22। तो अभी की हमारी जो लास्ट सेल थी FY23 उसका क्या सेल स्प्लिट है, और हमारी ओन ब्रांड सेल कम क्यों हो रही है? क्योंकि जो मेन मार्जिन बिजनेस है वो ओन ब्रांड सेल में ज्यादा होगा आई बिलीव। सही बात है। 22-23 में काफी सारे जो स्पाइसेस के जैसे जीरा हो गया, चिली हो गई, उसमें प्राइस में काफी बढ़ोतरी आई थी, तो उसमें हमारा जो रॉ मटेरियल था वो हमारा काफी ज्यादा रॉ मटेरियल पड़ा हुआ था, तो हमने उसको सेल किया, इसलिए थोड़ा हमारा अनब्रेडेड अदर सेल्स में ज्यादा सेल्स दिख रहा है। बाकी अभी हमारा हाफ ईयरली रिजल्ट आप देखोगे तो 54 करोड़ की जो हमारी सेल है ना, उसमें 35 करोड़ की ओन ब्रांड सेल्स है हमारी। तो सर हमारी क्या गाइडेंस रहेगी ओन ब्रांड सेल्स की? ओन ब्रांड सेल्स हमारी रहेगी ऑलमोस्ट 60-70% के बीच रहेगी इन FY24, और 25 में हम प्लान कर रहे हैं कि वो उससे आगे बढ़ के 75-80% के बीच है। ओके और सर एक और बाइफर्केशन आपने दिया यहाँ पे कि जैसे होल स्पाइसेस 45% रेवेन्यू आता है, ब्लेंडेड स्पाइसेस से 1% रेवेन्यू आता है, बट ब्लेंडेड स्पाइसेस लुक्स लाइक अ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जहाँ पे मार्जिन ज्यादा मिलेंगे हमें, तो हम उसकी सेल को बढ़ाने का कुछ जी जी जरूर। अभी उसी पे हमारा फोकस रहा है। हम लोग पूरा जो हमारा ब्लेंडेड स्पाइसेस की जो रेंज है उसको हम पूरा नए तरीके से रीलॉन्च ही कर रहे हैं। मतलब ब्रांड हमारी डबल आती ही रहेगी, लेकिन उसका जो पैकेजिंग का लुक है, उसका जो पैकेजिंग का जो क्वालिटी है, और जो अभी हम ब्लेंडेड स्पाइसेस के लिए जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था उसको भी हम कहीं ना कहीं चेंज कर रहे हैं। तो काफी सारे हम स्टेप्स ले रहे हैं कि हमारा जो ब्लेंडेड स्पाइसेस वाला सेगमेंट है उसको हम जो 30% का हमारा जो ओवरऑल ग्रोथ है उससे डबल ग्रोथ में उसको, या तो डबल से भी ज्यादा ग्रोथ में ब्लेंडेड स्पाइसेस को रख पाए। उसके ऊपर अभी काफी सारा काम चल रहा है हमारा इंटरनली। तो सर जैसा आपने बोला सीटीसी आपका मेन बिजनेस है, पर सीटीसी तो हाईली कमोडिटी प्राइस पर, जैसे जो ओवरऑल पूरी मंडी में चिली, टर्मरिक या कोरिएंडर की रेट चल रही होगी उसके अकॉर्डिंग आपके प्राइसेस डिराइव होंगे, तो ये मार्जिन बहुत ज्यादा कमोडिटी बिजनेस नहीं हो गया आपका कि जो मंडी में रेट चल रही होगी आप उसी रेट के अकॉर्डिंग आपको आगे पास ऑन करना होगा? तो कभी हाई इन्वेंट्री रह सकती है, कभी लो इन्वेंट्री, तो हाउ डू यू टेल दिस कि गिवन की सीटीसी आपका मेन बिजनेस, मतलब मेन रेवेन्यू आपका सीटीसी से आ रहा है? यस सही बात है। और तो उसके लिए हम लोग पूरा जो हमारा प्रोक्योरमेंट रहता है वो ऑलमोस्ट हम 70-80% का प्रोक्योरमेंट हम पूरे साल में, जो सीजनल पीरियड रहता है 2 या 3 महीने का, उसमें हमारा पूरा प्रोक्योरमेंट रह जाता है। तो हमारा वर्किंग कैपिटल थोड़ा बढ़ जाता है उसके कारण, लेकिन कहीं ना कहीं हम प्राइस को कैटर कर सकते हैं। हम पूरे सीजन का जो 3 महीने में हम 12 महीने का हमारी जो जरूरियात रहती है वो हम प्रोक्योर कर लेते हैं। तो पूरे साल में हम प्राइस फ्यूचर में कमोडिटी की कम हो गई तो आपका जो हाई कॉस्ट इन्वेंट्री रहेगा उसके लिए क्या हमने कोई मेजर लिया हुआ है, हम कोई हेजिंग कर रहे हैं या कुछ? नहीं, उसमें प्राइस फॉल से कैसे बचाते हैं जो हमारे पास हाई कॉस्ट इन्वेंट्री रह जाएगी कल को? हाँ, हाउ डू वी डील विद दैट? सही बात है। वो उसके लिए क्या है मैडम कि स्पाइसेस इंडस्ट्री में हमारे जो फर्स्ट जनरेशन है, मेरे फादर और अंकल, उसके जो एक्सपीरियंस के हिसाब से हम प्राइस का कुछ ना कुछ अनुमान लगा पाते हैं कि भाई इस साल स्पाइसेस की इंडस्ट्री कैसी रहेगी। मोस्टली हमारा जो अनुभव रहा है प्रोक्योरमेंट में
उसमें जो सीजनल पीरियड रहता है उससे कभी कम दाम नहीं जाता है। हार्डली 10 सालों में एक साल ऐसा आता होगा कि जो खेडूत मतलब जो फार्मर्स का जो सेलिंग प्राइस रहता है उससे मार्केट नीचे गया हो। जो मतलब आप बोल रहे हो ना कि जो मंडी में जो प्राइस से फार्मर सेल करने आते हैं और जो हम सीजन में खरीद करते हैं उससे कम दाम पूरे साल में तो नहीं जाता है। और ये हमारा एक्सपीरियंस से हम लोग उसी हिसाब से हमारा खरीदी करते हैं कि भाई पूरे साल में अगर डाउन जाने जैसा लग रहा है तो हम तीन महीने 4 महीने का माल लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का खरीदी करते हैं। तो ये एक्सपीरियंस के हिसाब से हम थोड़ा मैनेज कर पाते हैं इसको। ओके और सर ये सीटीसी भी आपकी ओन ब्रांड सेल्स में ही आता है? नहीं, पूरा सीटीसी नहीं, पूरा ब्लेंडेड स्पाइसेस और अदर जो प्रोडक्ट्स है स्पाइसेस के अलावा वो सब ब्रांडेड में ही आता है। ओके तो सर हम रेवेन्यू बाइफिकेशन कैसे करते हैं? मतलब अगर हमें रेवेन्यू बाइफिकेशन करना है तो हम होल स्पाइसेस ब्लेंडेड स्पाइसेस ऐसे करेंगे या मतलब दोनों का क्या रेवेन्यू बाइफिकेशन था फर्स्ट हाफ ईयर का और FY23 का अगर आप बताएं तो? यस, मैं आपको बताऊं तो हमारी जो ओन ब्रांड है ना उसमें 4-5 कैटेगरी आती है। एक हो गई ब्लेंडेड स्पाइसेस, ग्राउंड स्पाइसेस, ग्रोसरी प्रोडक्ट्स, टी एंड होल स्पाइसेस। ये हो गया ओन ब्रांड सेल्स। और अदर स्पाइसेस, अदर सेल्स मतलब नॉन ब्रांडेड में आ गया हमारा होल स्पाइसेस और फूड ग्रेन्स। तो आपको H1 FY24 का बाइफर्गेशन बताऊं तो ओन ब्रांड सेल्स में हमारा जो ब्लेंडेड स्पाइसेस है उसका सेल रहा है 119 लेक्स का, ग्राउंड स्पाइसेस का रहा है 1340 लेक्स का, अदर ग्रोसरी प्रोडक्ट रही है हमारी 184 लेक्स की, टी का सेल रहा है हमारा 40 लेक्स का और होल स्पाइसेस रहा है 1872 लेक्स का। while other sales in non-branded in whole spices are stood at 1873 lakhs। ये कुल मिला के होता है 5428 लाख का। ये हाफ ईयर का बता रहे ना सर आप? यस, ये हाफ ईयर का बताया मैंने। सर जस्ट टू कंफर्म सर, दिस इज ब्लेंडेड टी, ऑल ब्लेंडेड टी ग्रोसरी एंड ओन ब्रांड में और क्या? सॉरी सर एक बार आप ओन ब्रांड का रिपीट करेंगे क्या? ब्लेंडेड 1.19 lakhs, Yes. 40 lakhs, groceries 184 lakhs. Yes. Ground spices are 1340 lakhs. Okay. And sir, whole spices 1872. 1872, yes. तो अदर सेल्स में सिर्फ होल स्पाइसेस रहती है? हाँ, अदर सेल्स में होल स्पाइसेस रहेगी जो बल्क में सेल होता है विदाउट ब्रांड। ओके ओके ओके, गॉट इट। एंड सर वन लास्ट क्वेश्चन, अगर हम इतना अच्छा रेवेन्यू कन्वर्ट कर रहे हैं 65 से 127 करोड़, देन हम कैश फ्लो में नेगेटिव, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हमारे नेगेटिव क्यों आ रहे हैं ईयर ऑन ईयर? ठीक है, ये आपको मेरे ऑडिटर ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। सर्वेश जी। Yes. Hello. Hello. Pardon your question. Oh yeah, so I just wanted to understand your sales have doubled from 65 CR in FY22 to FY23 Yes. to 127 CR. Yeah. However, at the same time, the cash flow from operations, you're generating negative cash from operations. So what is the main reason behind this? The cash flow from operation is in minimum figure it is in negative. The actual reason is that there is a due to seasonal business, the heavy stock has been lying in the form of the closing stock, which is due for the sale in the next for next quarter. That is the main reason that the cash flow is in negative in the 2023 financial. But if you see the result for this financial year, the cash flow has become operating profit has become positively from this semi-half quarter. But sir, this would be a seasonal matter. Every year we would see negative cash flow from operations because of stock pile up. No, the actual what happened in the initial year, there is a
heavy cost for the marketing cost also is heavy in the initial financial year, in the financial year 21-22 and 22-23. Now we are taking the benefit of the cost which has been expanded in the form of the marketing. So from this semi-year for this financial year, you see the operating cash flow from the positive side. Even you just analysis the our result for semi-year for the 6 months, the cash flow, I think it is in negative, positive part. So, but as the managing director, sir, rightly commented here, that because of the nature of the business, they make 70 to 80% of all the procurement during the main spice season. Yeah. So this heavy stock would always be an issue. After Deepavali, the main sale arrives after Deepavali only. For these 4 months, the sale is almost in terms of the volume and rupees terms is almost double compared to the previous 6 months sale or 7 months sale. Okay. And so what percentage is the marketing cost, if we could just have a number? Marketing cost, actually the main marketing has been done in the last 2 financial year only, the financial year 21-22 and 22-23. So naturally, the main product is the B2C product. So marketing cost is the main cost to get the benefit from the market. So it is not in the fixed terms or fixed percentage, but they had incurred a heavy cost in the financial year 22-23 of almost, I think, 2 to 3 crore rupees in that financial year, and even in the current financial year, almost to same amount. Right, Rishit bhai? Yes, right. In current year, we spend almost 1.25 CR behind advertising in news media and hoardings. Even if you see the inventories of, if you compare the 2 financial year results in inventories for 2023 and 2020, so the inventories block is also increased due to the procurement of the raw material in the, you can say in the main season time, where the new crop are available. So it's the main reason operating profit is somewhat in the negative due to investment in the inventories and the same amount for the creditors is also pending to be paid due to the procurement of the new crop. So that is the main reason that the operating profit is in the negative terms. But just wanted to add here, if we see the sales of own brand to increase in future, then we need to incur more marketing costs to have that own sales, higher own sales. So how do we see this marketing cost going down? It cannot be a one-time cost. Marketing and advertising you need to keep on doing if you want to increase their own brand sales. So as of now, company was not listed, but after listing, the one type of marketing also done in the form of the branding by taking the benefit of the listing in NSE merge. So regarding the marketing cost, Rishit bhai would have the better idea, but I think now everyone knows the Madhusudan Masala Limited. So yes, madam, we got inquiries from outstate, like from Telangana. We have hot inquiry that whole Telangana state एक मतलब बायर है जिसको डिस्ट्रीब्यूटर है जिसको पूरा तेलंगाना स्टेट चाहिए हमारे मसाले बेचने के लिए, क्योंकि वहाँ पर खुद एक FMCG प्रोडक्ट का छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा हुआ है उसका. तो ऐसी मतलब काफी इंक्वायरीज आ रही है विदाउट एनी मार्केटिंग ड्यू टू अवर IPO. तो एक नॉर्थ दिल्ली से हमें साउथ दिल्ली से हमें एक इंक्वायरी आई है, वो भी हॉट इंक्वायरी है. कहीं ना कहीं जाके वो भी. How are you responding to these queries of expanding beyond Maharashtra and certain parts of Rajasthan? अभी फिलहाल हम लोग उसको ऑन होल्ड रखे हुए हैं, क्योंकि हम वहाँ का मार्केट हमें पता नहीं है कि वहाँ कैसा प्रोडक्ट चलेगा.
तो अभी हमने उनको होल्ड पे रखा है। हमारा कोई बंदा जाके एक बार वहाँ मार्केट सर्वे करेगा, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा चल रहा है, कैसा वहाँ का क्वालिटी कस्टमर प्रीफर कर रहे हैं, क्या कस्टमर का मतलब प्रोडक्ट का कॉस्टिंग क्या आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर डीलर मार्जिन क्या है, वो सब सर्वे करने के बाद हम वहाँ मार्केट करने का प्लान करेंगे। लेकिन आपको जो मार्केटिंग स्पेंड के बारे में जो आप बता रही थी ना, तो उसके बिहाफ पे मैंने आपको बताया कि आफ्टर आईपीओ हमें काफी सारी इंक्वायरीज आ रही है, जो कि ना कि हमारा एग्जिस्टिंग मार्केट के वहां से, बाकी जो जहां पर हम कहीं प्रेजेंस ही नहीं थे वहां से भी हमें काफी सारी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए इंक्वायरीज आ रही है। तो इस साल हमारा मार्केटिंग स्पेंड थोड़ा कम रहा है, लेकिन अभी आने वाले जो सीजन रहे, हमारी सीजन वैसे स्टार्ट होती है फरवरी से, तो अभी हमारा फरवरी और मार्च में मेजोरिटी स्पेंड रहेगा मार्केटिंग के पीछे। Okay, got it. And so one last question, this is the last one. आपका 22 से 23 आपके फिक्स्ड एसेट्स डबल हो गए हैं, तो ये जितने भी फिक्स्ड एसेट्स डबल हुए, इज इट बिकॉज जो आप न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं ऑटोमेशन की, उसकी वजह से हमने पूरी उसकी कॉस्ट बुक कर ली, या फ्यूचर में भी अभी हम कोई और कॉस्ट इनकर करेंगे कैपेसिटी को बेटर करने के लिए, न्यू टेक्नोलॉजी लाने के लिए? नहीं, अभी हम जो टेक्नोलॉजी ला रहे हैं वो लेटेस्ट मतलब लास्ट टेक्नोलॉजी है, जो कूल ग्राइंडिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं स्पाइसेस में, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम लोग ला रहे हैं। तो अभी हमें अगले आने वाले 10 सालों में हमारी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो टेक्नोलॉजी ला रहे हैं हम पूरी नॉन एटमॉस्फेरिक कॉन्टेक्ट मशीन से, तो हम कहीं भी पूरे यूरोप में भी हमें अगर एक्सपोर्ट में जाना है तो हमें कोई एक्सपोर्ट के लिए भी कोई इश्यू नहीं आएंगे। ओके सर, मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि उसकी जो कॉस्ट है, ऑलरेडी हमारे फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट डबल हो चुकी है। 22 से 23 में फिक्स्ड एसेट्स डबल हो गए हैं। हाँ, अगर हम बैलेंस शीट को देखें तो अभी और हम कोई कॉस्ट बुक करेंगे फिक्स्ड एसेट्स में? Yes, सारा खर्चा हो चुका है अभी? no. In this financial year also, you are seeing the result for the 6 month only. So in this financial year also, some of the fixed assets will added to this block. Some of the 25 to 30%, I think. Okay, so this year we'll see a 25 to 30% rise as well. As of now, we are seeing this. Yeah. Okay, as of now, so it could even go beyond that point. Might be. सारा कैपिटलाइज नहीं किया। Hmm. Okay. And sir, in this thing only, sir just said that we would be among the top 3 players in the country in the spice manufacturing. So by top 3 players, you are trying to compete with the big brands like MDH, Everest, or whatever the big players? No, madam. We are not top 3 sellers. We will be top 3. We will be in the top 3 manufacturers as per our procurement of our new plants and machineries. Our supplier has told us that machines are supplied to some of Indian manufacturers among top 3. You are in top 3 players. We are not top 3 sellers. In terms of procurement of the in terms of manufacturing process and our equipments, we are in top 3. So technology wise top 3 or capacity wise top 3? No, technology wise, madam, not capacity wise. We are technology wise top 3. Okay. Thank you, sir. That was really very informative. Thank you. I'll just join in the question queue. Thank you. The next question is from the line of Abhay Jain, an individual investor. Please go ahead. Hi, thank you so much for giving the opportunity. Sir, मुझे ये पूछना था आपसे कि आपके डेट कम करने के कोई प्लान है? जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि आपका डेट में ऑलरेडी 42 करोड़ से 40 करोड़ हुआ है, तो एनी फर्दर प्लान ऑफ रिड्यूसिंग द डेट? Yes, डेट अभी
42 करोड़ है, तो अभी तो फिलहाल तो नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने एक कोल्ड स्टोरेज अभी हमारा रिसेंटली ऑपरेशनल हुआ है, तो उसका भी डेट बड़ा है। फिर अभी हम लोग जो ये नए प्लांट्स लगा रहे यूनिट, तो उसकी वजह से अभी रिसेंट के पीरियड में तो डेट कम नहीं हो पाएगा। और हमारा जो बिजनेस है वो हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बिजनेस है। आने वाले पीरियड में अभी हमारा सेल बढ़ेगा, तो उसके लिए भी हमें रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट के लिए भी काफी सारी वर्किंग कैपिटल की जरूरियात रहेगी। तो जो हमारा डेट है वो अभी आने वाले कुछ पीरियड तक तो इनटेक रहेगा, बढ़ेगा नहीं लेकिन कम भी नहीं हो पाएगा। एक चीज और थी कि आपके ना एबिटा मार्जिन 11% के अभी आ रहे हैं, तो आप ये मेंटेन करेंगे या और भी इम्प्रूव आएंगे? एबिटा तो हमारा इम्प्रूव होगा आने वाले, मतलब आप H2 में हमारा एबिटा इम्प्रूव होगा, क्योंकि अभी जो हम लास्ट ईयर हमारा एबिटा था उसमें अदर सेल्स जो नॉन ब्रांडेड था हमारा, उसका पोर्शन ज्यादा था। तो इस साल अभी हम लोग ओन ब्रांड में हमारा सेल्स ऑलमोस्ट H1 में तो डबल हो गया है। तो आने वाले H2 में भी ये सिनारियो कंटिन्यू रहेगा, तो उस हिसाब से एबिटा हमारा इम्प्रूव होगा। ठीक है सर। अभी इससे पहले आपने ना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात की थी, तो H1 में इससे पहले 33% था, जो अब 40% हुआ है जैसा आपने कहा था, और H2 में आप ये कह रहे हैं कि 70 to 75% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा। तो H2 FY23 में कितना था सर? FY23 में पूरे साल का हमारा 33.5% था। Sir, so there is a sudden increase in the capacity utilization, which is going to be 70 to 75% from 40%. मेरा मतलब 70 to 75% जो हमारा सीजनल पीरियड रहता है उसमें होता है। पूरे मतलब H2 में 70% नहीं होता है। हमारा जो सीजनल पीरियड रहता है फरवरी से स्टार्ट होता है, तो फरवरी मार्च से लेकर जून जुलाई तक हमारा 70-75% यूटिलाइजेशन होता है, क्योंकि वो सीजन का पीरियड रहता है। तो उसमें हम एक शिफ्ट की वजह 2 शिफ्ट में भी काम करवाते रहते हैं। तो वो पीरियड हमारा, तो उसकी वजह से हमारा जो कैपेसिटी है वो हम हायर साइड रखते हैं। हेलो, मैं ऑडिबल सर? यस, यू आर ऑडिबल। तो मुझे ये 6 महीने का जानना था सर कि जो आगे आने वाले 6 महीने हैं इसमें पूरा 70 to 75% होगा? नहीं, पूरे 6 महीने में 70-75% नहीं रहेगा। ये मैं आपको सीजनल पीरियड बता रहा हूँ। ओवरऑल आपका मेरा जो FY24 में यूटिलाइजेशन होगा वो करीबन 45 से 50% के बीच रहेगा। और सर ये इससे पहले 1 साल पहले कितना था? अभी जो आप कह रहे हैं 45 से 50% होगा, वो 21-22 में 29.5% था। अच्छा, ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन मेरा और था कि आप अपने रेवेन्यूज बाइफरकेट करके बता सकते हैं, ये डबल हाथी ब्रांड और महाराजा ब्रांड में से इन दोनों की? हमारा मेजोरिटी डबल हाथी ब्रांड से ही सेल रहता है। महाराजा में सिर्फ हमारी CTC ब्रांड है, वो ही डबल हाथी और महाराजा दोनों ब्रांड में अवेलेबल है। बाकी जितने भी ब्लेंडेड स्पाइसेस हो गए, ग्रोसरी प्रोडक्ट्स हो गए, अदर स्पाइसेस हो गए, वो सब डबल हाथी ब्रांड से ही हम सेल्स करते हैं। तो ऑलमोस्ट 85% सेल हमारा डबल हाथी ब्रांड रहता है और 15% जितना ही महाराजा ब्रांड से रहता है। ठीक है सर। और मेरा लास्ट क्वेश्चन सर यही रहेगा कि आप ये मार्केट शेयर गेन करने के लिए क्या कर रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट से, कि आपके एक्टिविटीज क्या कर रहे हैं आप लोग ऐसे जिससे आपका मार्केट शेयर इंक्रीज हो? मार्केट शेयर में तो अभी हम जो एग्जिस्टिंग हमारा जो सौराष्ट्र रीजन है वहाँ तो हम लोग 40 ईयर्स से, मतलब 4 दायकों से हम लोग सेल कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हमारा 15 से 20% जितना मार्केट शेयर है हमारा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सब मिला के। ये टेंटेटिव फिगर्स रहते हैं, क्योंकि स्पाइसेस इंडस्ट्री का कोई मॉनिटरिंग नहीं होता है कि एग्जैक्ट फिगर हमें मिल पाए। तो बाकी का जो एरिया है वहाँ पर हम लोग तो मार्केटिंग से ही हमारा प्रेजेंस बढ़ा सकते हैं।
जो मार्केटिंग करने के बाद जो हमें हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को क्या ऑफर करें, रिटेलर्स को क्या हम ज्यादा से ज्यादा स्कीम या तो मार्जिन दे पाए, तो उस हिसाब से हमारा पैटर्न रहता है। और टारगेट हम करते हैं कि डबल डिजिट का हमारा मार्केट शेयर अचीव कर पाए हम लोग। तो सर मैं कब तक एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपकी प्रेजेंस राजस्थान में या महाराष्ट्र में आगे होगी और वो रेवेन्यूज में कब तक रिफ्लेक्ट करेगी? अभी इस FY24 में राजस्थान हम नहीं कर पाएंगे। अभी हम लोग महाराष्ट्र को कवर करने का अभी हमारा स्ट्रेटेजी बनाया हुआ है। हमने ऑलमोस्ट महाराष्ट्र के लिए सेल्स टीम का भी मतलब उसको एक्वायर कर लिया है, जो कि अभी दिसंबर से ज्वाइन करेंगे। अभी दिवाली का पीरियड था तो वो लोग दिवाली के बाद ज्वाइन करने का हुआ है। तो 1 दिसंबर से हमारा महाराष्ट्र रीजन जो है उसका डिस्ट्रीब्यूटर डीलर जो हमारे पास ऑलरेडी इंक्वायरीज तो आई हुई है, तो महाराष्ट्र हमारा FY24 में दिखेगा। राजस्थान के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फरवरी मार्च से या तो अगले साल में शुरू कर पाए ऐसा हमें दिख रहा है। क्योंकि हम लोग है ना पूरा मार्केट स्टडी सर्वे करके ही एंट्री लेते हैं। ऐसे कोई डिस्ट्रीब्यूटर का इंक्वायरी आया और चलो हमने माल भेजना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं करते। वहाँ जाके पूरा सर्वे किया, हमें हमारी क्वालिटी कैसी है, वहाँ की कंपटीशन में क्या क्वालिटी आ रही है, क्या मार्जिन से, वो सब सर्वे करने के बाद ही हम नया मार्केट शुरू करते हैं। और सर बस एक चीज की क्लैरिटी जानना चाह रहा था कि आपने कहा कि ओवरऑल जो इस साल के रेवेन्यू होंगे वो 30% से इंक्रीज होंगे, प्लस आपका एबिटा भी एक इम्प्रूव्ड नंबर में आएगा, जो कि पहले था उससे अच्छा ही आएगा, राइट सर? यस, ठीक है सर, थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। Thank you. We have the next question from the line of Tanvi Jain, an individual investor. Please go ahead. Ms. Jain, I have unmuted your line. Kindly proceed. Ms. Jain? Ms. Jain? This brings us to the end of the question and answer session. Ladies and gentlemen, I would now like to hand the conference over to Mr. Ramadhin Rane for his closing comments. Over to you, sir. Thank you, Mission. On behalf of Hem Securities Limited, I thank Rishit ji and Sarvesh ji for giving their time and replying to all their queries in a detailed way. I would also like to thank once again all the participants for joining this call. Over to you, Mission. Thank you very much. Thank you, members of the management. Ladies and gentlemen, on behalf of Hem Securities, that concludes this conference. We thank you for joining us, and you may now disconnect your lines. Thank you.